And we are proceeding ahead with the group task, and this task is for financial officer post in HPCL, and chartered accountants are called without written exam for interview and group task. So let me brief all of you. Some of you are waiting for your calls in IOCL kind of organizations also. Let me tell you what is group task and how the marks are given in group task, because it is different from the group discussion. So you need to keep certain things in your mind before you go for group task. They are very, very important. And if you don't follow these, you may get rejected. And if you follow these, then it is very easy to smooth actually entry in the group task, and you can very easily qualify. So since it is a group task, understand you people are not actually behaving individually. You are to behave as a team. That is very, very important. You are a part of a team. Group task. So observer will give you one particular riddle. He will give you one particular task. Task is in the form of some professional, a particular point, and he tries to know your prudence. He tries to know your acumen and your skill to think in a professional manner and to solve the riddle. Now, there are many things he would like to check in the process. Number one, how good are you in getting along with others? That is the number one thing. How good are you in providing the solution to the problem, listening to the solution given by others, get yourself, adapt yourself to the views of others, shaping the views of others, and molding yourself. How flexible are you? ये बहुत सी चीजों को वो चेक करता है. जब भी कोई प्रोजेक्ट कोई प्रॉब्लम आपको दिया जाता है, तो यू पीपल आर टू गिव अ सॉल्यूशन. Group discussion में solution of the problem is not expected from you. Though conclusion you can give, but not solution. Here, conclusion is in the form of solution. I'm going to give you some problem, some case study, some issue. You guys are to give me a solution as a group. Now, one fellow only starts and one fellow only concludes. In the group discussion, it is hurriedly done, and it is the survival of the fittest. I mean, whosoever will run fast will win fast. So that is in group discussion, not group task. Group task में it is always your group behavior that matters. सबसे अब आप बोलोगे कि सर अगर हम दौड़ेंगे नहीं तो स्टार्ट कौन करेगा? ग्रुप टास्क में whosoever will start first will get mileage, and whosoever will conclude will get mileage. Now the point here is, like, if you somehow start early but you don't make a good start, then entire group loses. If you conclude hurriedly but you don't conclude nicely, entire group loses. So there is a common fate also of each one of you as a group. Sometime what happens, entire group swims, entire group sinks also. So that thing is also there. तो यहाँ पे तुम्हारा individual performance ही नहीं देखा जाएगा, group का भी देखा जाएगा. No doubt in one particular group some of you will be eliminated and some of you will win. But those who will get eliminated, reason number one for their elimination is if you move away from the rest of the herd, if you move away from rest of the group. So group के अंदर रहना is very, very important. You guys are sheep and you are not to come out of the group. You have to move in a group. That is very, very important. किसी भी stage पे आपको लगे कि whatever you are saying makes sense and others do not make sense, but they are not ready to listen to you, join them. Join them even if you think that you are correct. Don't stand on one side and entire group on other side. You will be eliminated even if you are correct. Last year there were 18 group tasks in HPCL, and we know that the solution of those tasks, what was the solution for those tasks, that was known. And I told the students that this is the solution, but if you find that others are not sticking to this solution, change your solution and stick with them. क्योंकि आप अलग से नहीं चल सकते. हाँ, you can keep your point. You can always tell them that this is what I feel, what is your view. And if you find that others are not ready to listen to you and they have their own points, तो तुम उनकी बात मान लो और उनके साथ चल पड़ो. तो तुम्हें उनके साथ बात करनी है, उनको अपना मनाना है या उनकी बात मान लेनी है, लेकिन ग्रुप में आगे मूव करना है. मार्क्स किस चीज के मिलते हैं? इनोवेटिव थिंकिंग के. जब आप एक पॉइंट दोगे तो ऑब्जर्वर बड़े ध्यान से सुनते हैं कि इसने जो पॉइंट दिया वो मीनिंगफुल है, इसलिए इसको मार्क्स मिलने चाहिए. इसने ग्रुप के साथ मिलकर काम किया, इसने ग्रुप के साथ ही रहा, इसके मार्क्स मिलते हैं. एलिमिनेट कौन होता है? नंबर वन, जो बाकी लोगों से अलग दिखेगा, जो बाकी लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन में आएगा, वो एलिमिनेटेड. नंबर टू एलिमिनेशन, जो कुछ नहीं बोलेगा वो भी एलिमिनेट हो जाता है. नंबर थ्री, जो बहुत ही हार्श बोलेगा और ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोसीडिंग को, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा.
तो ये 3 चीज कभी मत करना, अदरवाइज यू आर एलिमिनेटेड। नंबर 1, ग्रुप से अलग मत दिखना। नंबर 2, आप दूसरों को ऑब्स्ट्रक्ट मत करना। नंबर 3, चुप मत बैठना, कुछ ना कुछ तुम्हें बोलना पड़ेगा। सो ये 3 चीज अगर तुम नहीं करोगे, एलिमिनेट नहीं होंगे। अब एलिमिनेट तो नहीं हुए, मार्क्स कैसे मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशन के, मार्क्स मिलते हैं कितने अच्छे तरीके से तुम दूसरों को कोऑपरेट कर रहे हो। जैसे सपोज तुम्हें लगता है कि आप में से कोई एक नीलेंद्र बात नहीं कर रहा, तो तुम्हें कुछ देर के बाद बोलना है कि ओके फ्रेंड्स, आई थिंक नीलेंद्र हैज अ पॉइंट, नीलेंद्र वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट इन दिस। इस चीज का बेनिफिट ग्रुप टास्क में मिलता है, जीडी में नहीं। ग्रुप टास्क इज अ ग्रुप एक्टिविटी, वो मिलता है। अब आप में से कोई एक कंक्लूजन करेगा, कंक्लूड जब करोगे तो वो कैंडिडेट करता है जो पूरे ग्रुप के सॉल्यूशन को नोट करता चला जाता है। जीडी और ग्रुप टास्क में एक और डिफरेंस है, एक रिडल तुम्हें दिया जाएगा, उस रिडल के सॉल्यूशन तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो तुम्हें बोलते रहना है ओके फ्रेंड्स, तो हम एक चीज पे तो एग्री कर गए हैं कि ये ऐसे होना है, तो अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस एग्री कि ये पॉइंट पे ऐसे करना है, यस ओके डन, सो लेट्स गो नेक्स्ट नाउ। कंसेंसस बना के चलते चले जाओ और लिखते भी चले जाओ कि तुम कहां तक पहुंचे हो, वट एवर यू हैव डिसाइडेड, कीप जोटिंग डाउन जिसने कंक्लूजन करना है। Because the moment observer say, okay, somebody would like to conclude now, give me the solution, that fellow should come forward who has very meticulously noted down the things. And in the group, all the members will give you chance if they know that you have very meticulously noted down the things. Not everybody can do that. So if you have done that, you get the chance for conclusion. कई बार वो बोलेंगे कि सी नाउ आई एम गोइंग एंड यू डिस्कस अमंग योरसेल्फ, आई विल कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर और यू कम आफ्टर हाफ एन आवर, गिव मी द सॉल्यूशन, दे विल से दैट। लेकिन तुम्हें मान के चलना यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, इवन इफ यू फील दैट यू आर नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन, आप मान के चलना कि यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स नो कैजुअल बिहेवियर, नो अनप्रोफेशनल बिहेवियर, मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म। मे बी इट लुक लाइक इनफॉर्मल बट नॉट कैजुअल। इनफॉर्मल एंड कैजुअल में डिफरेंस है। इनफॉर्मल मीन्स यू आर टॉकिंग कि ओके राजवीर, ये तो हमें पता लग गया, अब तुम्हें क्या लगता है आगे क्या करना चाहिए, ये इनफॉर्मल है। लेकिन अनप्रोफेशनल नहीं है, ये कैजुअल नहीं है। कैजुअल मीन्स हंसना स्टार्ट कर दिए कि यार ये क्या दे दिया हमें, ये कैसे हो गया। कैजुअल मत करना, इनफॉर्मल कर सकते हो तुम, लेकिन आपको प्रोफेशनली ही उसको डिस्कस करना है। और यहां जब तुम डिस्कस करो तो ऐसे लगना चाहिए कि तुम एक ग्रुप के मेंबर हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम आपस में फाइट कर रहे हो। यू आर फाइटिंग एज अ ग्रुप विद अदर ग्रुप, यू आर नॉट फाइटिंग विद इन द ग्रुप इन ग्रुप टास्क। एंड बहुत से ग्रुप टास्क पड़े हुए हैं, एंड आई विल एडवाइज यू के एक वीडियो है एचपीसीएल के 18 ग्रुप टास्क का। और एचपीसीएल नॉर्मली वही ग्रुप टास्क पूछता है, जब भी पूछता है उनके पास, मेरे को लगता है ये 18 ही ग्रुप टास्क हैं, आई डोंट नो, आई मीन दे आस्क द सेम थिंग एंड आई एम गोइंग टू अपलोड समडे दोस ऑल ग्रुप टास्क सो दैट एटलीस्ट दे चेंज इट। सो यू गो थ्रू दैट वीडियो ऑफ 18 ग्रुप टास्क आस्क्ड बाय एचपीसीएल। मैंने पिछली बार वीडियो डाला था यूट्यूब पे, एंड स्टूडेंट्स वर रजिस्टर्ड विद मी अस, दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग कि सर आपने ओपन डाल दिया, तो हमने हटा के उसको पैनल पे डाल दिया था। आई डोंट नो वेयर इज दैट ऑन द पैनल। लेकिन जो जा रहे हैं एचपीसीएल के ग्रुप टास्क के लिए, वो 18 ग्रुप टास्क जरूर गो थ्रू कर लें। They are very interesting. They're very interesting, and I'm very sure they're going to ask you something related to that only. So, any question you want to ask before I give you the riddle and we start forward? Anything you want to ask? Where we'll get that? That is on the panel actually. So, what you can do is tomorrow you can ask any executive or maybe Gurinder say you can ask on the panel. There is a video where all 18 group tasks are explained by Dr. Vijender, which HPCL asked. 18 सारे के सारे हैं उसके अंदर, उनका solution, उनके टास्क सब है। तो वो तुम एक बार देख लो, 18 वो ग्रुप टास्क HPCL पूछता क्या है, वहीं से वो लोग पूछते हैं। मैं उनको कुछ टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वो वहीं से पूछने की ट्राई करेंगे। सो इफ यू गो थ्रू दैट एंड दे आर नॉट अवेलेबल नाउ ऑन यूट्यूब, दे आर नॉट अवेलेबल, एक दो तो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। जो आपने एंटर करना है HPCL रियल ग्रुप टास्क, तो एक दो आ जाएंगे। 18 के 18 वहां पे पड़े हुए पैनल पे, you can go through that, right? Okay, now should I share the task with you guys? And here it comes. Okay, I give you this task and maybe it is visible on your screen now. Is it visible? Yes. Let me read out this now task to you, and this we are going for HPCL, a financial officer, a chartered accountants, interview and group task के लिए हमने इसको कर रहे हैं। You are provided budget of ₹1 crore and you are to spend it within 1 month, as financial year will be over within 1 month. And as you know, if you don't spend it, it will lapse. It will lapse and it will have negative repercussion for your office. So you want to spend 1 crore within 1 month. कई बार इसको मैड मार्च रश भी बोलते हैं कि पैसा खर्चो किसी भी तरीके से।
So you have to purchase certain items for office, including machines, stationery, computers, etc. for office, not personal, but for office with this amount. How shall you allocate this amount? 1 crore रुपए के आप कैसे allocate करोगे? What is the procedure? Keep in mind the prudence of expenditure. I mean कुछ समझदारी दिखानी है कि expenditure करना कैसे है, and proper transparency focus करना कि जब पैसा खर्चो तो उसकी auditing, उसकी accounting part, उसका transparency part ये clear रहे. So now you guys are to suggest some means by which you are going to do it. So this task is going to be there on your screen for some time, and then we initiate it. So 2 minutes you have, just see this particular task. Okay, so I think you have gone through this entire now task, and this task is given to you. So now you are to go through this task, and you have to give me the solution after 15 minutes of discussion. So each one of you will give your points, and the point should be relevant. And at the end, you have to give me the solution as a group.
any one of you can present this as a group. Now I open the house for discussion among all of you, and I expect it to be a very, very smooth discussion. So please go ahead and try to find the solution to this. Good evening, friends. My name is Nilendra Pandey, and I would like to initiate and introduce the group task that is given to all, which is we have been provided a budget of 1 crore rupees, and we have to spend it within 1 month. Otherwise, it will lapse. We can spend it on some fixed things like stationery and machines and other stuff, and we have to take care of proper transparency and auditing. So, in my opinion, I would like to divide this task into three parts. First of all, let us decide what are the requirements that are there in the office, whether stationaries are required, whether machines are required. We can identify all those steps, and for that we can take feedback from employees or office manager. The second step would be, let us make a priority list that which machine, how much we should spend, and which is to be bought first. For that we can do a brainstorming session where or we can make small groups like Kaizen circle, and we can decide in that. And the third one is that we should divide all the tasks within ourselves, like some of us will do the work of auditing, some of us can do the work of accounting, and some of us can be involved in purchasing. So I think if we proceed in this manner, we can do the task in a better way. And now I would like to open the house for discussion. Nilendra, I want to add one point that you told that first we will do the survey kind of thing, but first we should see whether there are pending demand or requirements from various departments. That first, that demands need to be considered, because this cannot be case that at a particular point of time there were no demands or requirement of various departments in any big organization. So first we should consider that. Then we can, after fulfilling that demands, we can float a survey basically, and after getting the feedback of the survey, we can allocate the funds on priority basis. Like we can allocate the fund on long-term assets, like whether some critical machinery is required, because it will give returns in long term as well. Yes, I agree. As Rajat said, we have to spend on machinery, so that after purchasing machinery, we have also to provide training to workers. So some amount will be spent on these. Yes, I agree with that point. I have noted down a few areas like where we can spend, and we can see that where we should spend more and less. So among them, there is old infrastructure. If some old infrastructure needs to be replaced, changed, or renovated. The second could be the updating of machinery. As we all know that in most of the offices, what happens is that old software, old machinery is still used, and no operation is there. So we can update that. We can spend this money on safety and security, like in the buildings. Like we can spend that on the safety things, like whatsoever are there. Usually they go expire because they have not been used, so we can replace them. We can spend this money on Bhupendra, I want to add one thing, that you told that we can replace all the old things, but if these things are working properly, then there is no need of replacing. There is no need. I'm just telling you that how many areas are there where we can like look into. These are the areas which are okay. I think for this we should consult to the IT team and also for the technical teams. They can inform us about which computer must be updated or which machinery is outperforming, and which can be also upgraded. Guys, I want to add one point. Like there may be possibility that we are unable to spend the whole amount. So we have to see the future plans also. Like in future, what kind of machinery is required. There may be a case like we have to purchase certain machinery in next year. So we have to consider that. This is not Simran. This is like 1 crore is allotted for this month itself. So we have to spend. But if we are unable to spend the whole amount, then we can see the future plans. What I feel is that like our this organization is also work on the future potential of the company. That's why she is talking correctly, that we should also consider the future potential of the company. That's why we should also consider the future requirement of the company. It's like
buying Actually, technology. Actually, we are considering the case actually of we HPCL. can spend Like on consider the case of CSR HPCL. 1 activities crore also. is not that much big That amount. is not a big amount. That could go in maintenance, opening some like Maintenance. updating anything. You can see that. And it we was have mentioned in to, the task office that if we areas are are unable also to large. spend it, it will have a negative impact. So we should try Right. to spend it. Exactly. so we have to see Okay, the so I future plans also. Now there may So- be possibility that we are unable to spend. So first So we If should we are guys, unable to let spend, us then try list. to also we focus can on the spend. areas where we can spend right now. We should list. If we could not, that is different thing. First, let us see that where we can spend. Yes. So I first think we the should list requirement out can the be things. yeah, I think to list out the things, we can divide it broadly into two categories for the requirements. One is on the urgent basis, the things that are required on urgent basis. For example, the Yes. ergonomics. For example, the chair that you have in offices. Right. You know, the chair should be good so that there is no back pain. The lighting, these things affect the productivity of the company. So these things must be taken care urgently. And some things are for long term. For example, the computers, they are old, but if they are working, so by this means, which are urgent and which can be used, which are not that much of priority right now, we can divide it into two cases and then we can proceed further. Yes. Right. We can So, also Can So we also should spend list down on all the things demolition, that on the demolition. anyone can list down Just like how the yeah, allocation just will be. like listing. if we spend. Yes. Yes, Yeah, what yeah, were go you on. saying? we can That also wasn't review clear. the old technology which has gone obsolete, because in the future they will the value of that item will also increase, and the value, I mean to say that the future में उसका रेट तो बढ़ ही जाएगा नया टेक्नोलॉजी लेने के कारण, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी का रेट बढ़ जाएगा और उसका जो ऑब्सोल्यूट हमारे पास पड़ा वो उसका रेट गिर जाएगा। इस कारण से जो ऑब्सोल्यूट हो गया उसको भी रिप्लेस कर देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही। जस्ट लाइक कंप्यूटर पेंटियम का अगर पड़ा हुआ है तो उसका बेटर है कि हम लोग नया प्रोसेसर अपग्रेड करा दें या कंप्यूटर रिप्लेस कर दे कम्प्लीटली, अगर वो क्योंकि ज्यादा पावर कंजम्पशन हो रहा होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And stationery is all time need, I think, in our Yeah. PSU. So we एक्चुअली can जब हमने spend some amount कैपिटल on that. वो जो खरीदी थी मशीनरी, जब खरीदी थी तो उसके उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट होगी अगर बाद में उसके अगर चेंज करना हुआ तो उसको डेमोलिशन वगैरह के लिए भी कॉस्ट हमें पहले से इंक्लूड करके रखनी पड़ेगी ना कि उसके लिए इतना पार्ट ऐसे कर। But I think उसके लिए अलग से बजट होता है and that will be There is- covered after it. in next financial year that can be covered. Yes, Like in the next depreciation financial year. cost of that machine can be considered. So That we can give it in a list that this is the machinery and now we will look after it. We should also consider servicing of the mechanical items. That's why they will work properly. friends, we should list down the things. Like we are not listing things, so we will not reach a conclusion this way. So we should allocate the funds. Yeah, And we should list down the things and side by side we should also allocate the fund. Yes. Yeah. Like first can be urgent basis or current requirements. Yeah, first is But stationery what will- because it is an all-time need. Yeah, So yeah, it is we all. have to include stationery. That is fixed. So like we can bring stationery for next 3 months. Yes. It will not cost much. The point is this stationery won't cost much. So after that, the other thing could be updating on machinery. Okay. The third thing could be the ergonomic design, which Yes. is now very much important for long Yes. long hours productivity and efficiency. So updating tables, not tables, but chairs mainly. That must be there. So that will be a significant part. And other than that, software requirements which are there for like the corporate softwares, they're also good enough Licenses. amount are there. Licenses. Are Yeah, there. licenses Right. of the software. So we couldn't spend money on those. We can purchase latest licenses. Yeah, advanced latest softwares. license. We can purchase computers also. Yes. Like if any new employee has joined, then we can show that, see, these much employees have joined, so that's why we are purchasing it. Yeah, that Okay. could also be. So we have 4 items right now: stationaries, computers, ergonomics, and softwares. Anyone wants to add anything else? It could be like safety equipments. Safety equipment. Okay. Safety. I think safety is the critical part in like oil companies or safety things. and So security. there is no separate allocation for that required. Basically. No. The thing is that if
things are required. Like say if it is an office and the fire extinguisher, if that like that gets expired, so we could replace that, or fire regarding extinguishers, safety helmets. Expenditure on training to workers. that We are not adding new technology, like we are adding new machinery on No, which they have. that machinery will have, like, we are Machine. considering a robot or CNC machine of different manufacturers. So that will require some basic training. We should That will not also cost we should much, I also think. try to we should also work on the automation process or bring some AI based softwares. That's why to boost the efficiency or productivity of the companies. yeah, that could Or also be like some sort of Software training Like, the requirement. we can invest on AI based industry lighting. 4.0. We can invest in that also, if we are left with some funds. see one more idea I have in mind is that right now differently able people are out there. They are joining organizations, so doing something for them, because making their life easier in the offices and departments. So providing stuffs, or like making the environment in such a way that they could there's ease for them. I So think doing that's a some very I good would like to say point. one point. Good idea. Yes. this If you अगर have हम service- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ला रहे हैं तो कई सारे वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो उनका भी तो कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा. नहीं, it is not like नहीं, unemployment or artificial something. intelligence It is like just कि light वगैरह AI based. That's why to save AI the बेस power, to फुल्ली save the environment. AI बेस, तो एम्प्लॉयज तो होंगे ना नहीं अनएम्प्लॉयड, नहीं, तो उनका रिटर्न AI based. maybe you're not getting. It is like कि अगर जैसे दरवाजे पे कैमरा लगा हुआ है and it detects कि कौन आया कौन नहीं आया, so it could record your like कि तुम कितनी देर ऑफिस में थे or something like that. ओके. और मशीन इज नॉट फुल्ली ऑटोमेटेड. वो भी हम इक्विपमेंट्स वगैरह. For that, Camera- we need a proper planning, na. So we Yeah, that can't is do different. that. And 1 That's crore में the वो होएगा. yeah. To have surplus fund, then That's we can also Yeah. go for the eco-friendly machinery and etc. Which use less powers or less step or work in digital mode. We Replace on can manual. go for some renewable things like Yes. solar panels and those kind of lights. Also, we can That's go exactly I want to say that. Cost We of have the- solar panel cost will be huge. for. Yeah, but the cost will be high. Yeah, I But know. this Yes, actually I said that what I think. if we have a surplus fund, that's why I Okay, said. first of budget all, is what 1 given is crore like 1 crore, which is for I think the office and all that. Yeah. It doesn't go for the hardcore things, I think. So that is what I think. Okay, so we have listed enough items. Let's start budgeting. We have And one stationery, more, I computers. think that Yeah. yes, you go on. We have stationaries, computers, ergonomics, softwares, safety equipments, and equipments for specially abled, employees like Yeah. braille kids and hearing aids, like these things. And So- one yes. Yeah. Go on. The cafeteria or the some sort of shop we can also make arrangement for that also in our office space or somewhere like that, so that needful things could also be there. Like there might be there some sort of shop, but upgrading that or making things available, more things available that could also. Okay, so I think the majority, first of all, we should spend the budget on ergonomics because it is directly related to productivity of an Yeah. employee. So out of 1 crore, I think if we have 7 items, so I think 20 lakhs can be for ergonomics. Roughly, Okay. we can increase or decrease later on. Huh. I'm saying it So roughly. like the percentage wise, how much? Yes, percentage wise. So 1/5 I'm giving to ergonomics. Okay. Okay. Second, After that, we can have computers and softwares because they Yes. are quite costly. Yes. So Okay, Fair just enough. for yeah. I think. I think we should consider the priority basis. I have made a list for the priority basis, just Okay. like but we have replaced the item which is required on the urgent basis. Thereafter, we should go for the servicing of the mechanical items for the smooth running of their of the company or the offices. Thereafter, we should
work or invest in the items which will increase the productivity or the efficiency. And thereafter, fourth number, we should consider our safety equipment or retest our safety equipments. And in fifth number, we should work on the renewable sources of energy, that's like you said earlier. And thereafter, sixth number, we should replace the obsolete item. And thereafter, seventh number, we should go for the licenses, just like you said. And I in the last, exactly don't agree. Can you repeat the list? Like it was some like yes, I have didn't noted make sense. points. Much sense. I can repeat it again. First was the urgent basis. Yes. Second one is servicing of the mechanical items. Third was the What do you consider in that mechanical servicing of mechanical items sort of thing? So Like, it is a routine job, so this need not to be prioritized. And what will be the I didn't urgent get it. basis? What is inside there? Like What is the needed in servicing of urgent basis? like if the machinery is going to I mean to say that the Breakdown kind of thing. breakdown. You're talking about the factory or the refinery machinery. You're talking about that or something different. Because in the office, if you talk about, there could be copying machine, Xerox machine. Is there are some sort of those things will be there. There won't be heavy machinery. So machines. Okay, so we it's club also computers with those machines. We keep them in same category to save time because we are running out of time. Okay. right. So 1/5 is for ergonomics. For computers and machines, these will require more money. So 30 to 40 lakhs, I think we can give it for that. Yeah. So we have 20, and let us give 30 to this. So we have 50. That is half of the budget is done. Half of the budgeting is done. Okay. After that, we can have stationery because it is always required in the offices, but it is cheap. Okay, so we don't require that much Like amount of money. For that. 5 So lakh. 5 lakhs. Yes, 5 lakhs will be 5 lakh will sufficient. sufficient. 5 lakhs will be sufficient. So we have 55. Now we are left with 45. So Now, out of 45, of the expenses. out of 45, we can have specially able people for machines for specially able. They are costly, like braille kits. You need wheelchairs and you need hearing aids. So you can give 20 for that. Yeah, we can add on special features for them. yes. Yes. Okay. Then So 20. last one, we can invest on industry 4.0, like for future investment kind of thing. I didn't get it. What do you want to say with Like- industry 4.0? That is a broad term. In last, Like, if the amount remains, then we can spend on the other जो छोटे मोटे खर्चे बच जाते हैं, like gloves वगैरह employees के लिए, workers के लिए, और वहाँ पर But cleaning that areas will be के लिए. covered in Stationery. stationery, na? Stationary. If we are Separately नहीं cover कर सकते And- उसको. And safety equipments is still left. 35 Yeah. lakhs उसके left अंदर and भी safety equipments is left. So 20 for safety equipments and the rest 15 for arrangements of cafeteria as said by Bhupender. So that will cover Yes. 1 crore full. So we'll be able to spend the whole money. कुछ मैंने इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए. We have to spend it. You have No, to because spend. No investment. is- otherwise it will lapse. So we Okay. have to somehow spend it. Somehow- Are you guys ready sure. for now conclusion? So guys, you- first of all, we'll do the survey and we'll find out what things are required on urgent basis. Then after that, the priority list given by Nilendra. Nilendra, you can carry on. Okay, so I think we had a very good discussion, and there were a list was made on which we all reached consensus. We identified 7 different items on which we would like to spend. They are stationery, computer, and other machines. Whether new machines are required or repairment is required, or they require repair. The third is ergonomics. Fourth is software licenses. Fifth is safety equipments, and sixth is equipments for specially abled people, and the seventh is arrangements for a different kind of infrastructure like cafeteria. We gave 1/5 of the budget, that is 20 lakhs for ergonomics. Then we gave 30 for machine and computers because they'll be costly. After that, we gave 5 lakhs for stationery because it is very cheap. Then we gave 20 lakhs for specially abled.
we gave 20 for safety equipments and 15 for arrangements in cafeteria, and 30 was for machine, computers, and the software licensing. So that is how we did the budgeting. Thank you. Okay, so Narendra, can you again tell how you divided 20 lakh? When you said ergonomics, what was the meaning of that? Sir, chairs, the comfortable lighting, all those things that are required to work. Workplace design, no? Yes, sir, workplace design. Okay. So 20 we gave for that. Okay. After that, sir, we gave 32 machines which require repair or new computers or licensing softwares. So we gave 30 for that. Then we gave 5 lakhs for stationery. After that, we gave 20 lakhs again for equipments for specially abled employees. Okay. After that, we gave 20 for safety equipments like fire extinguishers and safety helmets, these kind of things. And 15 lakhs were for a new infrastructure like cafeteria or opening some kind of food court in the office. Okay. Okay, now let me give you the feedback of this discussion. Nailendra started this entire, and he gave he told you about the case study which was given to you, and then he said, okay, we need to make priority list and we need to spend it, and urgent basis we divide the things and which are not urgent, something like that. After that, you people started participating, but you could not provide very good points. I must say that you could not understand the point. Let me again see what was the topic properly mentioned. You need to read very carefully what topic is given to you. You have to spend it within 1 month, as financial year will be over within 1 month, or else it will collapse. So Simran was of the opinion that what if we don't spend it? Simran, that assumption is very wrong. Actually, if you assume that, then entire case study goes haywire. It is not a case study. तो सिमरन, आपके जो 2 पॉइंट्स थे दोनों ही बहुत ही वीक थे और उसकी वजह से वो आपको एलिमिनेट कर देगा. एक कि हमें सारा पैसा स्पेंड नहीं करना है, वो साफ लिख रहा है कि आपको स्पेंड करना ही है, अदरवाइज. मैं बोल रही थी कि फ्यूचर प्लान्स को देख के हम आज स्पेंड कर सकते हैं. लाइक व्हाट? आई मीन यू वांट टू स्पेंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मे बी हमें कोई मशीनरी की नीड हो एंड आज ही उससे ऑब्जर्व करके उस चीज को आज ही हम आपको ये एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नो कि फर्स्ट वो 31 मार्च तक तुम्हें खर्चना ही पड़ेगा. अगर तुम उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए लेके जाती हो तो वैसे ही नहीं होगा. तो दिस आंसर फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड एक्चुअली, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड द मनी. वो तो बोलेगा नहीं इस साल में खाते में दिखाओ, अदरवाइज तो अगले साल तो आएगा ही नहीं उसमें. और दूसरा आपका वीक पॉइंट था स्टेशनरी. स्टेशनरी तो बहुत ही कम खर्चे वाली चीज है. And here I would like to bring to the notice of each one of you. First, let me see. You can purchase certain items like machine, stationery, computer, etc. for office with this amount. How shall you allocate this amount? So he has given you some points like machinery, etc. computers, वो सारा आप खर्च कर सकते हो. But there are two kind of expenditures. And याद रखना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए तुम लोग अगर जा रहे हो तो आपको केस स्टडीज कुछ उस तरीके का आएगा. 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑन द असेट्स, यू क्रिएट द असेट्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डे टू डे एक्सपेंडिचर, दैट गोज वेस्ट. आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल ऑफ बोथ. मेरे पास 1 करोड़ रुपए है एज अ फैमिली, कहाँ इन्वेस्ट करोगे? 1 करोड़ रुपए कहाँ डालोगे? आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं. 1 करोड़ रुपए में लैंड परचेज कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट करेगी, या कोई घर ले लेते हैं जो हमें नीड है, या 1 करोड़ रुपए की गाड़ी लेते हैं, 2-3 मर्सिडीज खरीदते हैं, आराम से कपड़े वपड़े लेते हैं, शूज वगैरह लेंगे, स्मार्ट बन के घूमेंगे. टेल मी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वेयर यू विल इन्वेस्ट योर मनी. यस राजवीर. लैंड में जो अप्रिशिएट होती है, जो वैल्यू अप्रिशिएट होगा, राइट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. एवरीबॉडी नोज दैट. उसके लिए तुमने एसेट क्रिएट कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. जो रनिंग एक्सपेंडिचर है ना, डे टू डे का, पेन, कॉपी, आपके ये जितने भी चीजें तुम दे रहे हो एम्प्लॉइज को, ये रेवेन्यू, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ये इंस्टीट्यूट में नहीं रहता, ये वेस्ट हो जाता है, चला जाता है. जैसे आपने बोल दिया कि साहब स्टेशनरी ले आते हैं या बाकी चीजें ले आते हैं, एक तो उतना खर्चा आएगा नहीं स्टेशनरी पे, और रनिंग एक्सपेंडिचर है वो ऑलरेडी आपके इंस्टीट्यूट के अंदर होगा. दूसरी प्रोडेंस ये भी तुम सोचो
आपको लगता है आपका इंस्टीट्यूट बिना स्टेशनरी के चल रहा है अभी तक? वो चल रहा होगा, वो रनिंग एक्सपेंडिचर है, उसको लेके फायदा नहीं है और बहुत कम खर्चा आएगा उसमें। तो स्टेशनरी पे बहुत फोकस करना, इनफैक्ट दैट शुड बी लास्ट, कि अगले साल की स्टेशनरी अगर हमें चाहिए तो उसको अभी खरीद के रख लेते हैं। लेकिन उसमें भी एक ट्रबल है, इंजीनियर्स यहाँ जो बैठे हो जानते, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जो चीज तुम रख लेते हो अपने पास वो वेस्टेज है जगह का। इनफैक्ट अगर मैं पेपर के बॉक्स लाके रख लूंगा तो पर स्क्वायर फीट एरिया जितना मैं रेंट देता हूँ ना बिल्डिंग का, वो ज्यादा खर्चा आ जाएगा उसको स्टोर करने के लिए। इट इज कॉल्ड होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, दैट इज नॉट गुड। तो स्टेशनरी इज समथिंग विच जस्ट इन टाइम इट शुड कम, आई मीन आई नीड इट एंड टुडे आई टेक इट, नॉट कि फ्यूचर के लिए रख लेते हैं। 2 कमरे स्टेशनरी से भर लेते हैं, उन दोनों कमरों का रेंट ही 50,000 रुपये है मंथली, और तुमने स्टेशनरी ली बहुत कम अमाउंट का, कमरे भर दिए, तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये भी दूसरा आपका पॉइंट, वो चेक करने के लिए देखना ना प्रूडेंस कहाँ पे आ रही है। प्रूडेंस यहाँ पे आती है तुम्हारी कि तुम किस चीज में खर्च कर रहे हो उसको। फिर आपने नो डाउट यू पीपल टॉक्ड अबाउट स्पेशली एबल्ड पीपल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट, बट देन यू हैव टू टेल व्हाट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर you want to make. So you need to make some safety, or I think Divya mentioned corporate social responsibility or something, लेकिन corporate social responsibility का जो बजट है दिव्या वो ऑलरेडी फिक्स होता है, वो इसके अंदर हमेशा नहीं आता। तो अगर तुम्हें ऐसी कोई चीज बोलनी तो तुम ये बोलोगे कि if this money also comes under corporate social responsibility we can fulfill it। लेकिन corporate social responsibility तुम्हें करना ही पड़ता है, वो तुम्हें अपनी इनकम का इतना % करना पड़ता है। ये 1 करोड़ रुपए तो वो तो तुम्हें स्पेंड करना है, तुम्हारा एलोकेट हुआ था ये पिछले साल का, इसको खर्चो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सपेंडिचर, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो वहां पे तुम्हारा ये प्रूडेंस अगेन काम नहीं किया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये वाला पैसा नहीं आता, वो अलग चीज होती है। तो यहाँ पे वो गलती तुमने किया। फिर उसके बाद यस, इन द नेम ऑफ सेफ्टी you need to show that you are concerned about each section of your organization, and there are 2 girls sitting here, you did not talk about women actually. Safety amenities, you know, very good kind of safety features, maybe you could have talked about that actually, कि we need to do। अबे सारा काम देखो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है कि 1 करोड़ रुपए आपको दिया, आपको मतलब आपको बोला, तो आप अकेले डिसाइड तो नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस मेक अ टीम, you should make a team actually which should discuss it। so first step should be let's make a team, in that team we should put some people from different domain of knowledge। we should keep people from accounting and auditing, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उठाते हैं, एक हम प्रोडक्शन वाले को उठाते हैं उसकी भी इनपुट आ जाएगी, एक मार्केटिंग वाले को भी उठाते हैं। अब इन सारे मेंबर्स के अंदर आपने 5 मेंबर्स लिए, इन सारे मेंबर्स के अंदर आपके कुछ तो सीनियर मैनेजमेंट के हो सकते हैं, कुछ मिडिल मैनेजमेंट के हो सकते हैं, कुछ यंग फ्रेशर जो आए वो हो सकते हैं। फिर इनके अंदर वुमेन भी होनी चाहिए, मेन भी होने चाहिए, इनके अंदर डिफरेंट प्रोफेशन भी होने चाहिए, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, मार्केटिंग वाला हो, मैनेजर हो। तो आप डाइवर्स एक टीम बनाओ, डाइवर्सिटी आनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी का एक इनपुट होगा। टेक्नोक्रेट अलग इनपुट देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने हिसाब से बताएगा आपको, तो वो हो। फिर सीनियर मैनेजमेंट वाला कुछ और बोलेगा, फ्रेशर कुछ और बोलेगा। ये तुम्हें कैफेटेरिया के आइडियाज आ रहे हैं ना, ये यंगस्टर्स के आइडियाज जो तुम्हें आएंगे बिल्कुल कि सर कैफेटेरिया बनाओ ना, हमें खाने पीने में चाहिए अच्छा वहां पे, तो ये आइडियाज भी आएंगे। वुमेन होंगी तो उनको आइडियाज आएगा कि लेट्स हैव अमेनिटीज, गुड वॉशरूम्स, गुड अमेनिटीज, सेफ प्लेसेस वी शुड हैव, सो दैट पर्टिकुलर थिंग विल कम। देयर विल बी मैरिड पीपल, मे बी द मैरिड वुमेन विल सजेस्ट यू कि क्रचेस क्यों नहीं बना सकते हैं हम। वर्क प्लेस में जो लड़कियों की बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जो जॉब चली जा रही है, वो ये है कि बच्चों को कहाँ, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों को कौन देखेगा, तो क्रचेस क्यों नहीं बनाए जा सकते हैं। इफ एनी वन ऑफ यू गिव एन आइडिया कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वुमेन, व्हाई नॉट वी कैन हैव अ वेरी गुड क्रचेस एंड वी कैन क्रिएट, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वुमेन का भी तुमने सोच लिया, ये रियल वर्ल्ड इश्यूज तुम डिस्कस कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में तुम्हें क्या करना है, और कोई भी तरह का केस स्टडी आ सकता है, सबसे पहले सोचो कि तुम्हें टीम बनानी है, टीम में डाइवर्सिटी डालो। अब जो मैंने तुम्हें अभी सोल्यूशन दिया, तुम बहुत से केस स्टडीज ऐसी आएंगी जिसमें तुम ये दे सकते हो, और फिर उसको लगेगा हाँ ये उस डायरेक्शन में सोच रहा है। टीम बनाओ, तुम लोगों ने किसी ने टीम नहीं बताई, अपने आइडियाज देना स्टार्ट कर दिए। टीम बनाओ, टीम में डाइवर्सिटी लाओ, और फिर सोचो कि जो खर्चा करना है वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से करना और किस तरीके से करना है। और फिर अगर प्रायोरिटी बनानी है तो प्रायोरिटी सबसे पहला बेनिफिट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। जब हायरार्की आती है ना कि सबसे प्रायोरिटी किसको देनी है, तो ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद प्रायोरिटी किसको देनी है, आपको
किसी ऐसे सेक्शन को देनी है जिसको प्रायोरिटी तुम्हें देनी चाहिए, जैसे वुमेन एंड डिफरेंटली एबल्ड की तुमने बात किया, तो उनके स्पेशल नीड है, ऐसी ऐसी कैटेगरी जिसकी स्पेशल नीड है, सेफ्टी के लिए स्पेशल नीड हो सकता है वुमेन को, पर्टिकुलर जैसे आपका अगर ऑफिस सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए आपको ऑर्थोपेडिक चेयर बनानी है, कुछ बनाना है, लिफ्ट बनानी है, तो उनके लिए उनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है, दे दो। मैरिड वुमेन है, सो उनके लिए क्रचेस उनको दे दो, स्पेशल प्रोविजन दे दो। तो ये जो स्पेशल लोग हैं, जो स्पेशल आपके एम्प्लॉइज हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, उनके बारे में सोचो वो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, तो वो कैटेगरीज के बारे में फिर सोचना स्टार्ट करो, तो आपका लगेगा कि यू आर रिफ्लेक्टिंग द नीड फॉर एवरीवन। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की सोचो, फिर एम्प्लॉइज की सोचो, उसके उसके बाद बाकी सारी की सारी चीज आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। सो ये जो आपने हाइपोथेटिकली क्रिएट किया कि 20 लाख इसमें, 30 लाख इसमें, 10 लाख इसमें, तो आपको ये भी बताना होता है कि क्यों सोच रहे हो ऐसा, वाई यू आर थिंकिंग। सो इसमें एक चीज अच्छा था कि स्टेशनरी को तुमने 5 लाख रखे थे। आई एम हैप्पी यू डिड नॉट से 50 लाख ऑन स्टेशनरी, कि सर पेन ले लेंगे 5-2 लाख का पेन खरीदते हैं, फिर पेज खरीदते हैं। सो आई एम हैप्पी यू ओनली केप्ट 5 लाख फॉर दैट। और उसमें तुमने 2 लाख रुपया, 20 लाख रुपया आपने एर्गोनॉमिक्स के लिए लिया, तो इसको डिटेल में बताओ, एर्गोनॉमिक्स मीन्स व्हाट। यस, दैट वाज अ गुड पॉइंट। एर्गोनॉमिक्स मीन्स इट इज अ ह्यूमन कंफर्ट इंजीनियरिंग, इट इज द मैन मशीन इंटरफेस डिजाइन, दैट इज व्हाट एर्गोनॉमिक्स इज। कि जैसे आजकल जो वर्क लाइफ हो गया है तुम्हारा, बैठ के काम करने वाली चीज है, चेयर शुड बी कंफर्टेबल सो दैट हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एर्गोनॉमिक्स को अगर बोलना है तो डिटेल में बोलो ना, कि कुछ चेयर्स ऐसी हैं जैसे रिक्लाइनर होना चाहिए, कि दिन में अगर किसी को नैप लेना है तो बेड तो नहीं लगा सकते, रिक्लाइनर ले सकते हैं। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ माय ओन ऑफिस एक्चुअली। इन ऑफिस इट लुक्स वेरी ऑड इफ यू हैव बेड एक्चुअली। तो क्या होता है कि आजकल रात को बहुत देर तक काम होता है, मेंटर्स बहुत देर तक काम करते हैं, जैसे कई बार 2-2, 3-3 मेरे को ही बच जाते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन है, कम सोने का सोल्यूशन है दिन को पावर नैप लेना। दिन को आधा घंटा सोना इज इक्वल टू रात को 2 घंटे सोना। तो मेजोरिटी जो मेंटर्स बड़े हेक्टिक काम करते हैं हमारे ऑफिस में, वो क्या करते हैं, दिन को सोते हैं वो आधा घंटा 45 मिनट, वेरी फ्रेश एक्चुअली। तो उसके लिए बेड तो नहीं लगाए जा सकते, देन वी थॉट कि क्या कर सकते हैं यार, और अगर वो नहीं करेंगे चेयर पे तो बहुत ही वैसे लगेंगे, और चेयर पे सोते हुए अच्छे भी नहीं लगते हैं। सो एक रिक्लाइनर चेयर आती है, रिक्लाइनर चेयर में तुम उस पे सो जाओ आराम से, उस करो और नीचे और लेट जाओ, एंड दैट रिवोल्यूशनाइज द वे वी वर्क, यू नो, कि उसमें सो जाओ लेट के आराम से, आधे घंटे के बाद व्हेन यू हैव अ कप ऑफ टी एंड देन यू आर वेरी फ्रेश। अब वो चेयर थोड़ी सी महंगी आती है, लेकिन वो तुम्हारी प्रॉब्लम को खत्म कर देती है। दिस इज व्हाट ह्यूमन कंफर्ट इंजीनियरिंग इज। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल ऑफ टुडेज वर्क। ये कब से स्टार्ट हुआ? अर्लियर आई नेवर यूज्ड टू टेक सेशंस, यू नो, मैं ऑफिस आ गया अगर 7-8 बजे के बाद, तो 8 बजे के बाद कैसे करना, कुछ नहीं होता था। लेकिन अब ऑनलाइन एजुकेशन के बाद, इसी दिस इज द न्यू सिचुएशन हैज कम, ऑनलाइन के बाद स्टूडेंट्स आर रेडी, टीचर इज रेडी, देन व्हाई वी कैन नॉट लर्न। सो ये नई चीज आ गई। अब नई चीज आ गई तो वर्क प्लेस में भी तो नई चीज की रिक्वायरमेंट आएगी ना, कि तुम दिन को रात को ही नहीं सो रहे हो, तुम दिन को भी सो रहे हो। अगर तुम दिन को रात को वर्क कर रहे हो तो दिन को सो भी तो सकते हो ना। तो अब वो नया कॉम्बिनेशन आ गया। तो एर्गोनॉमिक्स मींस वो चेयर, रिक्लाइनर चेयर हम ले सकते हैं। तो आपको ना विजुअलाइज करवाना बहुत जरूरी है इसमें, कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। कि आपने बोल दिया कि एर्गोनॉमिक्स हमें चाहिए, तो एर्गोनॉमिक्स वर्ड से काम खत्म नहीं होगा। आप बताओ एर्गोनॉमिक्स मींस व्हाट? लाइटिंग सिस्टम शुड बी वेरी गुड। आपकी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है कंप्यूटर का, तो क्या एर्गोनॉमिक्स में वो कुछ बता सकते हो कि वो कंप्यूटर का और आपके बैठने का और जो बॉडी है वो पोस्चर किस तरीके से हो, उस पर हम खर्चा करेंगे। तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे को रिक्लाइनर चेयर चाहिए, अगर 10 चेयर्स आई वांट, तो वो 10 चेयर्स आई थिंक दैट कॉस्ट कैन बी, मैंने सुना है कि 40,000, 50,000, 60,000 की आती हैं, तो उसमें हम कुछ पैसा स्पेंड कर सकते हैं। वो ऐसी प्रूडेंस तुमसे सुनना चाहता है जिसमें कुछ रियलिटी तुम बोल सको, थोड़ा सा डेप्थ में तुम जा सको कि कौन सी चीज कितने में खरीदनी है। तो आपसे कौन से वर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओके एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या आपसे पूछ रहा है कि हम एसेट क्रिएट कर लेते हैं, या आपसे सुनना चाह रहा है कि जब आपने बोला कि मेरे को एर्गोनॉमिक्स चाहिए, तो वो सुनना चाह रहा है कि एर्गोनॉमिक्स मींस व्हाट, खर्चा कितना आएगा उस पर, ये बताओ। 2-3 चीजें जो आपने बताई हैं वो नहीं सुनना चाहता। जैसे एक पॉइंट राजवीर ने भी अच्छा दिया कि व्हाई नॉट वी रिप्लेस द टेक्नोलॉजी विच इज गोइंग टू बी ऑब्सोलीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका मतलब ये था कि आपको पता है ये लैपटॉप है मेरे को पता है ये खत्म हो जाएगा, इसके 6 महीने लाइफ है, अब ये नहीं रहेगा, तो इसको निकालो, नया लैपटॉप खरीदते हैं, तो पैसा काम आ जाएगा। इस लैपटॉप को मैंने निकाल दिया और अगले हमारा जो मैंने उसको खरीद लिया। तो अगर आपको लगता है कोई चीज ऑब्सोलीट होने वाली है,
टेक्नोलॉजी, मशीन, टूल होने वाली है तो पहले ही खरीद लो उसको। ये एक विजडम वाली बात है, मैं समझ गया उसको पॉइंट सही है, तो राजवीर को उसका पॉइंट का मार्क्स उसको मिल जाएगा। फिर जो बाकी आपने डेप्रिसिएशन की बात की, आई थिंक दिव्या बताने की ट्राई कर रही थी डेप्रिसिएशन, उसने लेकिन वर्ड नहीं निकाला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड फिर रजत ने यूज किया, राइट? दिव्या, इज दैट व्हाट यू वर टेलिंग मी व्हेन यू वर सेइंग कि सर ऐसी चीज जो वैल्यू कम हो जाए टाइम के साथ उसका कर दें, तो वर यू हिंटिंग टुवर्ड डेप्रिसिएशन दिव्या? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं बोला। आप कुछ पॉइंट बोल रही थी जो जिसका मीनिंग डेप्रिसिएशन ही आ रहा था, कि जिसकी वैल्यू टाइम के साथ कम हो जाए या कुछ कंज्यूम हो जाए, और वर यू सेइंग कि किस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, कुछ ऐसा आई थिंक यू वर टेलिंग। सर मैं ये कह रही थी कैप्चर, जब हम मशीन ही लेकर आए तो जिस लोकेशन पर लेकर आए, फिर वो लोकेशन अगर बाद में दूसरी मशीन लाई तो वो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं था, तो वो डिमोलिशन को लेके था। डिमोलिशन वर्ड गलत बोल दिया मैंने बोलना कुछ और जा रही थी कि लोकेशन के वो क्या बोलते हैं, मशीन जो हम दूसरी लगाएंगे फिर उसकी जगह, तो उसका जो स्ट्रक्चरिंग थी वो तो पहले वाले की जैसी होगी, तो उसको दूसरे के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। इंस्टॉलिंग ऑफ द मशीन, हाँ यस सर, कि मशीन इंस्टॉल करनी है। सर इंस्टॉलेशन के साथ बाद में जब हटाएंगे तो उसकी भी कॉस्ट हम साथ में लेके चले। ओके, बट वो तो इमीडिएट एक्सपेंडिचर में नहीं है यार, डेप्रिसिएशन उसमें नहीं आता एक्चुअली। डेप्रिसिएशन भी 1 करोड़ जो तुम खर्च रहे हो ना, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, ये पहले से फिक्स होती हैं चीजें, उसमें वो भी नहीं आएगा। सो अकॉर्डिंगली तुम्हें एसेट क्रिएट कर सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैक्सिमम पैसा जा सकता था। अगर मैं बजटिंग करता तो मैं बोलता इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैक्सिमम चला जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हो गया। फिर एर्गोनॉमिक्स पे चला जाए, वो लोगों की हेल्थ के हिसाब से हो गया। फिर सेफ्टी फीचर्स एंड सेफ्टी हम अमेनिटीज क्रिएट कर दें, वो वुमेन के हिसाब से हो गया। फिर क्रचेस क्रिएट कर दें, वो वेलफेयर वुमेन के हिसाब से हो गया। फिर अगर आपने स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज क्रिएट करनी है, वो उनके लिए सही चीज हो गया, वो है। और कोई ऐसी मशीन जिसकी कंपनी को नीड है अभी और वो हेल्पफुल हो सकती है कंपनी के लिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। तो लार्जली उसमें एक्सपेंडिचर करो, एंड वी शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन समथिंग विच इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और समथिंग लाइक दैट। वो चीज को तुम लास्ट में रख सकते हो, एंड दैट इज हाउ यू कैन डू इट। तो आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड हैव बीन डन। So I am sure you got some ideas, some points how we are to discuss and how not to discuss. जब तुम बजटिंग करते हो ना तो बड़े ध्यान से करना, उसके पीछे रीजन होना चाहिए कि क्यों। जैसे तुम सीईओ के पास जाओगे कि सर 20 लाख एर्गोनॉमिक्स पे खर्चना है, तो बोलेगा 20 लाख कैसे, ये नंबर कहाँ से आया तेरे पास, 20 लाख तूने कैसे बोल दिया, ये स्टेशनरी तू 5 लाख बोल रहे हो तो ये कहाँ से बोल दिया। इसके पीछे लॉजिक चाहिए, ऐसे नहीं कि सर ये तो मैंने सोचा। तो कोई दूसरा 25 लाख भी सोच सकता है, एंड दिस डज नॉट वर्क दैट वे कि 20 लाख 25 लाख। ट्रांसपेरेंसी, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग वर्ड मेंशन थे उसमें कि ऑडिटिंग अकाउंटिंग किया है तुमने, तो तुम 2 टीम बनाओ, एक टीम जो सजेस्ट करेगी और दूसरी टीम जो उसका एक्सपेंडिचर की, आपको पता है ऑडिटिंग इज डन बाय अनदर टीम, राइट? सो आपने एक्सपेंडिचर जिस टीम ने किया और जो ऑडिटिंग कर रही है सही हुआ है एक्सपेंडिचर, और ऑडिटिंग भी फाइनेंशियल ऑडिटिंग के साथ साथ प्रूडेंशियल भी होती है। दैट मीन्स कि तुमने जो खरीदा वो सही खरीदा कि नहीं, सही जगह से खरीदा कि नहीं, सही कॉस्ट में खरीदा कि नहीं। ऐसे तुम्हें 2 टीम्स बनानी पड़ेंगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगा और उसमें जो टीम है उसमें ऑब्वियसली यू विल शेयर योर व्यूज एंड ऑल। और दूसरी टीम बनानी पड़ेगी जो आपके एक्सपेंडिचर का प्रूडेंस चेक करे। इंटरनल ऑडिटिंग टीम हम एक क्रिएट करेंगे, ये टर्म्स आपकी तरफ से आनी चाहिए थी। सो if you are a chartered accountant, I want to hear certain things from you, like revenue expenditure, capital expenditure, auditing, internal auditing, and financial prudence. These kind of things I want to hear, depreciation and all. If you're a technocrat, if you're an engineer, I would like to hear something from you, like human factor engineering, human comfort engineering, that is ergonomics kind of terms, technological obsolescence, these kind of things. तो ये चीजें आपकी तरफ से आनी चाहिए। आपको अपना प्रोफेशन तो रिफ्लेक्ट करना है ना, कॉमन लेमैन के सामने डिस्कशन थोड़ी कर रहा हूँ। ये यहाँ पे जो आप बैठे, मेरे को पता कैसे चलेगा भाई आप इंजीनियर हो, फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कि आप लॉयर हो, कि आप डॉक्टर हो, मेरे को पता कैसे चलेगा, या आर्मी ऑफिसर हो आप। तो अपने प्रोफेशन को आगे लेके आओ, जो आपकी लर्निंग है आज तक की उसको रिफ्लेक्ट करो कि ये चीज हमें करनी है, एंड दैट इज व्हाट दे वांट। तो जो ग्रुप टास्क होता है वो इसलिए दिया जाता है। एंड में कंक्लूजन आपने कर दिया, दैट इज ऑल्सो देयर। और सिमरन, आप बीच में जब डिस्कशन कर रहे थे तो आपने पूरे हाउस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वो सब उस तरफ हो गए कि नहीं, अगर हम इस बार खर्च ना कर पाए तो क्या होगा, तो प्लान करो आगे का क्या होगा। जितने इंजीनियर्स थे बोल रहे थे नहीं इसी साल खर्च लेंगे, अभी खर्च लेंगे हम लोग सारे। सो ये आपने पूरा हाउस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
In fact, it should be reverse. Chartered accountant should say अभी खर्चो भाई, नहीं तो अगले साल पैसा नहीं मिलेगा, खर्चो इसको अभी. You should have said that. Engineer should have said नहीं नहीं अभी नहीं खर्च कर पाए तो क्या होगा, तो इसको अगले साल के फोरकास्टिंग करते हैं, अगले साल प्रोजेक्ट करते हैं. यहाँ पे रिवर्स चल रहा था, यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स हो गया था तुम लोगों का. So that is how it is to be done. So I think all from my side. It was your first. And रोहिताश आपने बहुत कम इनपुट दिया है और दिव्या का इनपुट कम है. नीलेंद्र ने डिस्कशन किया है, भूपेंद्र ने डिस्कशन किया है. नीलेंद्र के पॉइंट वैलिड थे, भूपेंद्र के पॉइंट भी वैलिड थे. सिमरन आपके पॉइंट वैलिड नहीं थे. राजवीर आपके कुछ पॉइंट वैलिड थे और कुछ पॉइंट आपके बहुत ही इनवैलिड थे. सिमरन के दोनों इनवैलिड थे, राजवीर का वैलिड इनवैलिड था. दिव्या ने पॉइंट दिए बहुत ज्यादा, लेकिन ओपन छोड़ दिए कि तुम समझ सको तो बूझ सको तो बूझो. दिव्या वाज समथिंग लाइक दैट कि मैं बोल रही हूँ कुछ, लेकिन तेरे को पता लगाना कि क्या बोल रही हूँ. डेप्रिसिएशन है, वो इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, तू सोच. मैंने जो बोलना था बोल दिया. सो दैट वाज व्हाट दिव्या सेड. एंड रोहिताश ने बहुत कम इनपुट दिया. रजत ने भी अपना इनपुट दिया है, लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम यू. सो दिस इज हाउ दिस एंटायर डिस्कशन वेंट, राइट? एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी नाउ? सर जैसे एक चीज मुझे पूछनी थी कि जैसे ये कह रहे थे कि सेफ्टी पे इन्वेस्ट करेंगे, तो सेफ्टी तो जैसी HPCL IOCL जैसे ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी तो मेन कंसर्न होती है उनकी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो वैसे रहती है. तो हम इस चीज में वो सेफ्टी का डिस्कस कर रहे हैं, तो वो तो वैलिड पॉइंट वैसे भी नहीं लग रहा था मुझे. एक तो देखो जो भी तुम्हें बोलना है, तुम्हें उसके ऊपर बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम ये बताओ, ये बोलो कि उसमें क्या बताना चाह रहे हो तुम. नहीं, और यहाँ पे ये HPCL की डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन हो रहा है, कोई भी. तो वो पहले हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा या हमें अज्यूम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में? क्योंकि अगर वो आप बोल सकते हो कि लेट्स अज्यूम दैट आवर ऑफिस इफ इट इज नॉट हैविंग CCTV कैमरास, देन आई थिंक वी शुड इन्वेस्ट ऑन दोस सेफ्टी फीचर्स. इट विल डिपेंड, लाइक अगर वो कोई प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो उधर अलग रिक्वायरमेंट होगी. और अगर वो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है सॉफ्टवेयर कंपनी का, तो उधर अलग रिक्वायरमेंट होगी. तो हमें इस बेसिस पे पहले assumption तो करनी पड़ेगी. जो भी तुम बोल रहे हो उसको assumption ले लो कि let's assume our office has this requirement. हाँ, तो ग्रुप को पहले बताना पड़ेगा कि किस टाइप की बात कर रहे हो ऑफिस. वो बताना पड़ेगा. जैसे पीछे कोविड के टाइम पे ना सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट था. कोविड के टाइम पे जितने भी हमारे GT हुए थे लास्ट ईयर, उसमें ये होता था क्योंकि एक हमें स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, आइसोलेशन वार्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे. तो पहले तो हमारा खर्चा 2 साल तक आइसोलेशन वार्ड्स क्रिएट करने में चलता रहा. अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं, तो अब हमें नई चीज ढूंढनी पड़ेगी. अब सेफ्टी में क्या बोले हम. पर पहले कोविड के टाइम पे ये भी एक सेफ्टी था कि हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, हमें वो हाइजीन के वो रखने पड़ेंगे, हमें हैंड सैनिटाइजर लेने पड़ेंगे. हम वो भी बोलते रहे 2 साल तक. तो ये चीजें भी लगा सकते हो तुम. यस, एंड डोंट फॉरगेट कोविड हैंड सैनिटाइजर एंड ऑल दीज थिंग्स. तुम उस तरीके से भी चीजों को बोल सकते हो, बाद में वो यूज कर सकते हो. तो सर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें ये सब चीजें रखी जाएंगी, तो इसमें अलग से जो फंड बचा वो इन्वेस्ट करने की कुछ जरूरत. आप ऑर्गेनाइजेशन में ना हमेशा एक्सपेंशन मोड में रहते हो. आप नए डिपार्टमेंट क्रिएट करते हो, नई फैसिलिटीज क्रिएट करते हो, और वो हमेशा स्क्रैच से स्टार्ट होती हैं. जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि अभी हमें एक और क्रिएट करना है फैसिलिटी, या एक जगह और क्रिएट करो इसको. कैफेटेरिया भी होगा, जो नीलेंद्र बोल रहा था कैफेटेरिया बनाओ, वो भी होगा आई एम श्योर. लेकिन देन देयर इज ऑलवेज अ नीड. यू ऑलवेज फील लाइक यू नो कि हमें उसकी नीड होती है चीजों की, एंड यू कैन ऑलवेज ऐड दैट. एंड मे बी ग्रीन हाउस. इसमें आप लोगों ने एनवायरनमेंट के बारे में किसी ने कुछ बात नहीं किया. बात करी थी, बैंगलोर सारा पानी में डूब गया और तुम लोगों को चिंता तक नहीं है यार. You should have talked a little bit about environment also. कि environment के लिए सोलर पैनल अगर लगाए जा सके, वो एसेट है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का. कि let's talk about little bit about environment also, friends. Like our office building, if it is not so solar panel equipped, what do you think? Should we go for that also? And फिर अगर तुमने सोलर पैनल लगा लिया और इलेक्ट्रिसिटी का यूज उस सोलर पैनल से कर रहे हो, तुम्हारे लिए एसेट क्रिएट हो गया ना. एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आ गई. तो आज की डेट में एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पे भी तुम बोल रहे हो कि एनवायरनमेंट हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट, देयर टेक्नोक्रेट सिटिंग हियर, दे नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट. तो ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट के फेवर में जो भी तुम कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन व्हिच यू हैव टू मीट बाय 2030. तो नेट जीरो कार्बन हमें 2070 तक चाहिए. नेट जीरो कार्बन की डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की फुलफिलमेंट के डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं. फ्रेंड्स, व्हाट इज योर व्यू इफ वी गो फॉर सोलर पैनलिंग ऑफ आवर बिल्डिंग? मे बी दैट द काइंड ऑफ साइज वी हैव, इट मे कॉस्ट couple of lakhs, maybe 10-20 lakhs. So do you think we should go for that?
सीधा ही तुम्हारे 15-20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई जो काम की है, और वो लोग कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं मत करवा, तो बोलेंगे हाँ वो तो करवाया जा सकता है यार, दैट इज गुड। तो ऐसे इनोवेटिव आइडिया सोचो ना तुम लोग क्या करना है ऑफिस में, एंड दिमाग उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाता है। तुम कुछ ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क देखोगे, तुम्हारा इनोवेटिव आइडियाज तुम्हें आना स्टार्ट हो जाएंगे उसमें। एनीथिंग एल्स? जैसे मशीन्स वगैरह लगाई तो किसी किसी मशीन्स मतलब ज्यादातर मशीन्स के लिए तो उनके एसी वगैरह उनकी कूलिंग के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा ना? नहीं, डिपेंड करता है आपने कौन सी मशीन लगाई है। जीरोक्स मशीन वगैरह 100% लोड फैक्टर पे चलते हैं, उसमें कोई कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनबिल्ट होता है वो। लैपटॉप वगैरह इनबिल्ट होता है और कूलिंग पे खर्चा भी नहीं आता ज्यादा, और एयर कंडीशनर्स हैं अंदर तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपेंड करता है क्या मशीन लगाना है, बट दैट इज नॉट अ बिग कॉस्ट एक्चुअली, राइट? ओके, सो आई थिंक दैट वी एंड इट अप। एक बार आप ना ग्रुप टास्क जितने भी ये सोचो, ग्रुप टास्क इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी वेरी थिंकिंग ओरिएंटेड स्टफ, वेरी इनोवेटिव थिंग। तो आप सोचो कि कैसे आप इसको पार्टिसिपेट करेंगे, और अगर तुमने नैक इसका पकड़ लिया कि कुछ ऐसा पंच मारना है, कुछ ऐसा पॉइंट देना है, तो ग्रुप टास्क में सोल्यूशन होता है। और जब अंदर जाते हो ना इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू होगा तुम्हारा ग्रुप टास्क का, वो पूछता है, जैसे किसी से पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या लगता है तुम्हें, वो खर्चे में होता क्या डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तुम बोल रहे थे वहां पे क्या होता है वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट। फिर तुम बोलेगा स्टेशनरी, तुम्हें क्या लगता है स्टेशनरी का कितना खर्चा आएगा, क्यों रखना चाहते हैं। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस, जैसे राजवीर ने बोला कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस है, अगर ऑब्सोलीट हो रहा है कुछ चीज तो उसको डू अवे करते हैं, तो क्यों तुमने ऐसा बोला। फिर सिमरन से पूछेंगे कि आपको क्यों लगता है आप खर्च नहीं पाओगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आपको क्यों लगा सिमरन आप नहीं खर्च कर पाओगे, तो आपको 1 करोड़ रुपए दूं तो खर्च नहीं कर पाओगे आप तो शॉपिंग में ही खर्च दोगे, ये तो ऑफिस की बात है। तो फिर बोलेगा क्वेश्चन ऐसा कि क्यों नहीं आप खर्च कर पाओगे। तो इंटरव्यू के अंदर वो जो आप जीटी में डिस्कशन करते हो ना, पूछता है अंदर जाके आपको क्यों लगता है ऐसा, क्यों बोला आपने वहां पे, फिर वो और डिटेल में जाता है, इंटरव्यू वहां से आगे स्टार्ट हो जाता है। खासकर एचपीसीएल और आईयूसीएल में ऐसा हुआ है पिछली बार, तो उन्होंने जीटी में वो क्वेश्चन पूछे हैं जो आप इंटरव्यू में अंदर जाके जो आप जीटी में करते हैं। और एचपीसीएल में जितने बच्चे होते हैं, ग्रुप टास्क में भी मेंटर्स काफी होते हैं वहाँ पे जो पार्टिसिपेट करते हैं, और वो इंटरव्यू में भी बैठते हैं अंदर, so keep that also in mind, right? Chalo, we end it up here only, and maybe tomorrow also we'll go for this group task. When is your interview in HPCL? 20 सितंबर 20 को आपका है, right? यस 5-6 करने पड़ेंगे आपको। सॉरी, अलग अलग डेट्स पे है क्या थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्या? अभी YourPedia पे जितना ग्रुप टास्क पड़े HPCL के वो देखना स्टार्ट करो। ग्रुप टास्क HPCL YourPedia एजुकेशन इतना डालो, उसमें आपके पास कुछ आ जाएंगे, उनको गो थ्रू करो, एंड देन टुमारो वी पुश इट फर्दर आल्सो, राइट? और ये जो आपके वीडियोस है इनको देख के एनालिसिस करना। का टाइम थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्या? 9 बजे या उसके आस 7 बजे से, उससे पहले कभी, मतलब थोड़ा जल्दी। या रोहिता स्पीक लाउड। सर जीडीजीटी का टाइम थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता क्या? कितना जल्दी, कब, व्हाट टाइम यू वांट? मतलब 10 बजे से पहले कभी भी हो जाए मतलब। नहीं यार, दिस इज ऑल पैक्ड एक्चुअली। 10:15 बजे मेरा वो होता है अलॉट करने का, एचआर अलॉट करने का, और 10 तक पैक होता है। At ये 10:30 is the only time actually we can do. We can do in the daytime also in the evening, but this is a regular time जिसमें सारे बच्चे अवेलेबल होते हैं. Some students otherwise are not available. So let's push it at this time as of now, and maybe 9 o'clock one slot I can spare, but as of now कुछ दिनों तक थोड़ा सा hectic है, 2-3-4 दिन वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का चल रहा है आजकल, तो उसके बाद 9 से 10 के बीच में we can do, right? 9 एक स्लॉट होता है, एक 10:15 का होता है, 10:30 का है. So let's do later on, right? चलो, गुड नाइट टू ऑल। हाँ, मार्किंग क्या सिस्टम है उसमें? मार्किंग कैसे होता है? हाँ, जैसे हम लोग बता सकता हूँ निकलने के क्या तरीके थे, कैसे कैसे निकलोगे तुम, कैसे सिलेक्ट होंगे, उसका तरीका है तुम इनोवेटिव आंसर दोगे। अगर वो इनोवेटिव आंसर दोगे तो तुम इन हो, लेकिन अगर गलती कर दी तो तुम आउट हो। ये सोल्यूशन जो आपने कितना अच्छा सोल्यूशन दिया उसके बेस पे होता है तुम्हें एंट्री। टिपिकल एक ग्रुप में से 50 to 60% बच्चों को वो ले लेता है। मतलब HPCL में अगर पिछली बार मैं बताऊं तो 8-9 बच्चों में से 6 बच्चे पास हुए हैं, 7 बच्चे रिजेक्ट भी हुए हैं, ऐसा भी हुआ है। सर वो पिछले साल सीए का सर वो उसमें जीटी नहीं हुआ था, डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ था पिछली बार। यस सर, डायरेक्ट इंटरव्यू पिछली बार, लेकिन जो जिनका जीटी हुआ था ना इंजीनियरिंग वाले बच्चों का, उनका मैं बता रहा हूँ कितने बच्चों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया गया था। कितने टाइम बच्चों को बुलाया है वहां पे इस बार सीए में?
How many times? और इसमें मेंशन नहीं किया सर, डेट दिया हुआ 20 सितंबर और टाइम दिया हुआ 8 बजे सुबह। You have to score minimum 40%, right, in group task. हाँ, एक साइड पे लिखा हुआ था। मैक्सिमम बच्चा ग्रुप टास्क में बाहर हो जाता है, मतलब निकाल देते हैं वो। HPCL वाले निकाल देते हैं, वेरी रूथलेस इन GT, निकाल देते हैं। और उनको एज पर माई नॉलेज पिछली बार HPCL में GT हुआ था, GT में जो पास होगा वो इंटरव्यू देगा, अदरवाइज इंटरव्यू में नहीं जाएगा। जो पास होगा वही इंटरव्यू देगा। इस बार भी यही है सर। हाँ, तो GT में फेल मत होना, और इंटरव्यू में भी बेसिकली आप निकाल लेना। इट इज इजी, नॉट डिफिकल्ट, बट प्रैक्टिस करो। यू अंडरस्टैंड, दीज आर स्मॉल ट्रिक्स यू हैव टू। हाँ, लैंग्वेज बैरियर है वहां पर? नहीं, पिछली बार तो नहीं था। HPCL इज पब्लिक सेक्टर महारत्न, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हो आप। तो जो 20 मिनट्स का डिस्कशन होगा वो विद इन द ग्रुप होगा, और उसके बाद 10 मिनट्स दिए जाएंगे सबको अपना पॉइंट रखने के लिए, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कोई एक आप में से बात कर सकता है, लेकिन ऑब्जर्वर के ऊपर होता है। अगर वो चाहे तो हर किसी को बोल सकता है अपना पॉइंट बता दीजिए आप। फ्लेक्सिबिलिटी, पर जिस पैटर्न पे आपने डिस्कस किया वो सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न होता है। कोई एक स्टार्ट करेगा, फिर वो एक कोई कंक्लूड करेगा, और बीच में वो ऑब्जर्वर सुनता रहेगा आपने क्या बोला, और बाद में फिर वो आपके साथ डिस्कस करेगा। ये Simran, your interview is on 23 September. 21st. 21st. So there are different dates because mine is on 16. obviously there are so many students, so they will have different dates. They will have different dates, but HPCL has the similar kind of group task. लेकिन आपको ग्रुप टास्क पहले बता भी जाए कि इस पे टास्क होना है, तब भी बच्चे रिजेक्ट होते हैं। तो उसका पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड। चलो, देन आई कैच यू टुमारो एट 10:30 अगेन, राइट? थैंक यू, गुड नाइट।